Jai Swaminarayan students. Today we'll continue with lesson number 2, that is queries, forms and reports in MS Access. Till now we studied the setting a relationship between tables, then about keys, then creating relationships. Now today we'll study how to create a query. So for that we have already created two tables in previous class, right? That is T1 table and T2 table. Using these tables only we'll create a query, right? So to create a query, report and form, you have to create table only once, and from वही table की use से वही table को use में लेके queries, forms और reports बना सकते हैं. So we have already created two tables, that is T1 and T2. Now we'll create a query from that. So to create a query, what you will do, you will click on create option, create tab. From that you can see here query wizard and query design, right? So now we are creating a query, so we'll click on query design. See, as soon as I'll click, the whole query tab will open like this. Now from this table you just need to select which table you want to create a query. Suppose I want table 2 to create a query, so I'll click on table 2 and I'll click on add. देखो जब मैं add पे क्लिक करूंगी, यहाँ पे ये field name अभी blank है नीचे की तरफ, यहाँ पे सब में automatically all the fields which I have added in table 2 will be written over here. See, add, and I'll put close, and here what I'll do, I'll just डबल क्लिक, जो भी मुझे चाहिए डबल क्लिक करूंगी, देखो यहाँ पे आ जाएगा. डबल क्लिक, डबल क्लिक, डबल क्लिक. सब चाहिए तो सब ले सकते हो, सिर्फ थोड़े बहुत चाहिए तो थोड़े बहुत ले सकते हो. सो दिस इज हाउ आई विल एड फील्ड्स इन द क्वेरी फ्रॉम द गिवन टेबल, राइट? ओके, आफ्टर दिस व्हाट आई विल डू, after this, see, this is how the query is written. Now what I'll do, here in any one of them I'll write here criteria. In criteria I'll write is equal to capital Visual Basics, right? And then I'll click on close button. For that what I'll need to, I don't have any close button over here. See, here I have close query, right? यहाँ पे क्लोज क्लिक कर सकती हूँ, या फिर यहाँ पे क्वेरी पे राइट क्लिक करके आई कैन क्लिक ऑन क्लोज. एज सून एज आई क्लिक ऑन क्लोज, इट विल आस्क मी टू रीनेम इट. आई हैव रीनेम्ड इट एज क्वेरी 1. चलो, टेबल 1 दिया था, यहाँ पे Q1 देते हैं, एंड आई विल क्लिक ऑन ओके. सी हियर, ये क्वेरी हो गई. नाउ आई विल डबल क्लिक ऑन हियर. सी, दिस इज द क्वेरी क्रिएटेड. फिर यहाँ पे आप स्टूडेंट नेम, स्टूडेंट्स डेट ऑफ बर्थ, स्टूडेंट्स एडमिशन डेट, कोर्स कोड, कोर्स ड्यूरेशन, यहाँ पे आप इंफॉर्मेशन ऐड करते जा सकते हैं. सो दिस इज द वे यू क्रिएट अ क्वेरी. Now we have different kinds of queries also, which is shown on page number 22, that is the row name and the action. For that, look, the row name and action. See, field, right? Field, what does it display? It displays the selected fields from the table. Table, what does it do? It displays the name of the existing table. Sort, sort वाला ऑप्शन क्या करेगा, जो भी आप टेबल के अंदर इंफॉर्मेशन डेटा डाल रहे हो उसको असेंडिंग या डिसेंडिंग, दैट मीन्स अल्फाबेटिकल वाइज A to Z या Z to A सॉर्ट कर देगा, राइट? देन शो, शो क्या करेगा, जो भी फील्ड पे आप टिक मार्क करते जाओगे, दैट आई विल शो यू इन नेक्स्ट क्लास, जिस पे भी टिक मार्क होगा वो क्राइटेरिया शो हो जाएगा, जिस पे टिक मार्क नहीं होगा दैट विल बी not shown. Next, criteria. What is criteria? It is a specific conditions, right? Specifies the condition based on the filtered records and displays the output. Next is or, a property that is used to set simple criteria. Now setting criteria, that we'll see in form and report.
राइट, दैट्स ऑल फॉर टुडे. दिस इज द वे यू क्रिएट अ क्वेरी. क्वेरी कैसे क्रिएट करोगे? सबसे पहले तो टेबल बनाओगे, right? Normal. After creating a table, what you will do? You will go to create tab and from that you will select design query. Design query select करने के बाद वहाँ पे एक add query का option आएगा, right? Just add the tables which you want in the query. Add करो, फिर double click करो field के ऊपर and all the fields will be typed automatically in the query. उसके बाद क्या करेंगे? You will close the query option, right? And then the query double click on that, जो भी नाम से सेव किया उसको डबल क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपका क्वेरी फॉर्म ओपन हो जाएगा, राइट? दैट्स ऑल फॉर टुडे. विल कंटिन्यू विथ हाउ टू क्रिएट रिपोर्ट, sorry, how to create form in next class.